ठीक है. Give me a second. Give me a second. Garima, you there? Yeah, I'm there. You are good at front end, right? Yeah. Good. So okay, I will be doing the back end one today, and then you will help me out in the front end. Cool. Okay. Okay. Just keep asking that out. So today we will create a project, full stack DApp, hopefully. So can you see the empty remix screen? Cool. Yeah, it's visible. Okay. First, the proper initialization, which is what do we say? Give me a second. Can we? It is on. Okay, no worries. It is on our. I will copy this code and use it in the other browser. Okay. We'll start with our contract, and we will name it election. And it's going to be a voting contract, so every user will be able to vote on any one of the candidate, and they will be able to vote it once. At the front end, we will return all the candidates and the vote count of their candidate. By this process, almost all of the fundamentals will be created and will be established, and you might be able to create any single every single application, because we will be focusing on events and the getters and setters and how to handle it on front end. So including struct. So for that today, I have in that video, I've taught both Web3.js and ethers.js. So I am actually used to the older version of ethers.js, so some problem was coming. So I will be focusing on Web3.js, but both are more or less the same code, only a little bit of changes, and I will show you and I will tell you what are those. So I will just create a owner. Only the owner will be able to add the candidates. The candidates are the people, मतलब जो कि खड़े हुए हैं, मतलब जिनको वोट देना है अपने को. ठीक है, cool. Constructor, and that constructor will initialize that owner is equal to message sender. Only this owner will be able to call this call the function of adding the candidate. So now let's create a struct, custom data type, and we'll name it candidate. And event ID. It will have I'm creating an ID. The reason being, first you will properly know which candidate. Second is in the front end we will be mapping it right in React.js. So it's better to have an ID so that it will be handled better in the front end when we are creating cards, right? String name and event vote count. Mapping. Now we will map address to Boolean. Why we are doing that? So now this is voters or voters. Address to Boolean, and we will initialize at public voters. Every single voters will have like initially it will be false. So what will happen is like the moment someone tries to call the vote function, this it will be message.sender, and the value will go to true. It means that the person has already voted and he won't be able to vote it next. Now we will handle it accordingly. Let's see. It's something later part. Okay, now I'm going to answer create a mapping for a candidate in order to properly iterate through the candidates. So it will be candidate. Yes, you into candidate public candidates. The index will have one candidate, and now let's create a variable that will store the candidate count. Will help this. Here in the mapping of candidates, why have you given UN to candidate? क्योंकि और क्या दूं बताओ, एड्रेस क्योंकि हाँ, मैं एड्रेस इसीलिए नहीं है क्योंकि
कोई ओनली द, मैं पता कैसे सोच रहा हूँ, जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जो कैंडिडेट बैठेगा ना, उसको सेट कोई मतलब ओनर करेगा, ठीक है। हाँ। तो अगर मैं यहाँ पे एड्रेस डालूं, तो एड्रेस में क्या होगा कि हम लोग को कैंडिडेट का एक एड्रेस चाहिए होगा, इसमें कैंडिडेट के एड्रेस की जरूरत नहीं है अपने को, राइट। तो वी जस्ट यूनिट नीड, मतलब वो सिंपल इंडेक्स है। हाँ एक इंडेक्स है, दैट्स इट, बस उतना ही। We don't need the address of this candidate. We only need the address of the voters. That's it. But okay, at the end, if you have some other logic, you can create it. But my contract will work just just as intended. Public candidate count dates, क्या? तो ये काउंट कर लेंगे, फिर इसी के थ्रू ऐसे ऐसे करके अल्टरेट कर देंगे, ठीक है। इवेंट, ओके, cool, cool. गिव मी अ सेकंड। अभी क्या करते हैं, इवेंट हम कर देंगे वोटेड इवेंट। अगर इफ इट इज वोटेड देन एक इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बाद में करते हैं, अभी नहीं करते, बाद में करते हैं। नाउ लेट्स क्रिएट द इलेक्शन। only the owner will be able to call this function. Name public, require owner equal to message.sender. Could have used modifier, but I don't care. Simple. And now can't add candidate, get lost. Okay, now we are gonna create another function that will add the candidate. पता है ये एक format रहता है in which there should be, if you are making changes, you should create a private function, और उस private function को public function के थ्रू call कर देते हैं. You know, that's a convention that we follow if you are changing or adding something. तो एक और private function बनाएंगे. We will create a private function that will take this name and just add it. Means similar to this function only, but it will be private. I'll show you. It's just simple thing. बस इसलिए जिससे कोई बाहर का उसको एक्सेस नहीं। हाँ एग्जैक्टली, ये कन्वेंशन है, फॉलो करते हैं, मतलब ओपन डिसिप्लिन वाले। फंक्शन ऐड कैंडिडेट, string memory name, and we will make a temporary variable candidate memory and is equal to, अभी कैंडिडेट को एक एस्टेब्लिश करते हैं, कैंडिडेट ऑफ कैंडिडेट काउंट, आईडी हो जाएगा कैंडिडेट काउंट तुम्हारा। तो फर्स्ट मीन्स पहला जीरो से स्टार्ट होगा, वी टेक इट नेम एंड वी मेक इट जीरो, वोट काउंट इनिशियली तो जीरो ही रहेगा, राइट। नाउ कैंडिडेट्स ऑफ कैंडिडेट काउंट, तो अभी भी जीरो ही है, मतलब ये वाले को फिर से एक्सेस कर रहे हैं हम लोग। और अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू कैंड, ने इसको सेट कर दिया मैपिंग, कूल, जा रहा है मैपिंग पे जा रहा है, गुड। एंड नाउ वी विल जस्ट इसको +1 कर देते हैं, प्लस इक्वल टू 1 शॉर्टहैंड। अप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, तो पिंग कर सकते हैं, ऑल गुड। We have done this add candidate function. Now let's create the vote function. Vote candidate ID. अब अपने को चेक करना है कि फर्स्ट हम लोगों ने, हम जब वोट करेंगे तो हम एक इवेंट तो ट्रिगर करेंगे ही, पहली बात तो वोट, हाँ एड्रेस टू बूलियन, ठीक है ये है। तो अभी अपने को चेक करना है वोटर्स ऑफ मैसेज डॉट सेंडर इक्वल टू फॉल्स। अगर नहीं हुआ है फॉल्स मतलब ट्रू है, मतलब तो आपने वोट कर दिया, इट मतलब निकलो यहाँ से, मैसेज डॉट सेंडर not false, then haha, get lost.
now require statement, candidate ID, लोग यहाँ पे candidate ID less than candidate count. ज्यादा नंबर आ जाएगा ना, नशे में हो क्या? हाँ, गेट्स ओवर. वोटर्स अभी हम ट्रू कर देंगे. वोटर्स हियर, राइट? वोटर्स ऑफ मिस्टर सेंडर. इसमें वो कैंडिडेट आईडी नेगेटिव भी तो डाल सकते यूवेंट है ना? हैं टिकट के साथ. ओह भाई, डरा दिया मेरे. अभी जावास्क्रिप्ट से ही आ रहा हूँ ना अभी, तो वही है. कैंडिडेट ऑफ कैंडिडेट आईडी, कैंडिडेट्स ऑफ कैंडिडेट आईडी, सही है ना? डॉट वोट काउंट है ऊपर, डॉट वोट काउंट. कूल. प्लस इक्वल टू 1. अभी एक इवेंट बनाते हैं, इवेंट वोटेड इवेंट. इवेंट, हाँ, तुम्हारा उम्र रहेगा कि इसका ये कर देना है, क्या बोलो तो, इलेक्शन के लिए एक और इंडेक्स, सॉरी एक और इवेंट बना देना. ठीक है. इवेंट, आपकी स्क्रीन लैग कर रही है. वेट. सो अभी क्या दिख रहा है? 34th वाली लाइन पे फ्रीज है. ओके. कितना मिस किया आपने? 34th. देख अभी कितना दिख रहा है? हाँ, मतलब अब 36 है. ये समझे, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ. ओके, ठीक है. इवेंट बना देते हैं. जस्ट टेल मी, ओके, जब हो जाए. सेम थिंग. इंडेक्स अंडरस्कोर. अब दैट्स इट. इसका नाम कुछ रख दिया हमने, वोटेड इवेंट्स. गुड, ऑल गुड. सेव मार देते हैं. अभी एमिट करना है, वेट. एमिट वोटेड इवेंट्स. कूल. लेट्स चेक. तो चेक करते हैं अभी. वी क्रिएटेड दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड अप्लाई कर दिया हम लोगों ने. इलेक्शन डे 6 इलेक्शन. कूल. होपफुली we need 9. I needed to do something else, which is I want to create, which is the most important thing for the front end function for front end. Okay. Public view returns okay. हाँ, कैंडिडेट पब्लिक व्यू रिटर्न कैंडिडेट. और हम लोग इसको as we haven't stored it in an array, हम लोग क्या करेंगे, एक array बनाते हैं. as it is memory, right? memory पे हो रहा है. So we what do we say, so ज्यादा तो कुछ गैस फीस नहीं लगेगा इस पे. इसी के अंदर हो रहा है, right? कैंडिडेट काउंट. Greater than 0. There's a better way to do it. What you can do is, like, you should have created an array of this in the beginning, but I did not. Give entry. Candidate count. क्या दिक्कत है? Candidates. Okay. Candidate बना देंगे हम लोग इसका. Cool. Now let's create a candidate. Memory. Take it. No candidate. We create a fixed array. So this is how we create a fixed size array. Candidates count. For uint I is equal to 0.
I less than candidate count of candidate storage, because हर एक iteration के बाद वो चला जाएगा ना, तो इसलिए candidates of I. Now take it to of I. take it to अपना था इस पे, हाँ इस पे पुश कर देंगे, इस पे पुश नहीं, इस पे हाँ ऐड कर देंगे इक्वल टू क्या, और रिटर्न कर देते टिकट। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली सारे इन शॉर्ट बता देता हूँ, we have this in mapping, right? We do not have it as an array, ठीक है? You can create it as an array so that easy return हो जाएगा, तब ET नहीं लेना पड़ेगा। So instead of this, what you can do is you can simply create an array thing and you can handle it differently. So what I am doing, like uint2 candidate है, so what, and there is a वेरिएबल दैट स्टोर्स द काउंट। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टेम्पररी अरे बना रहा हूँ, उस पर सारे कैंडिडेट पुश करके रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? सिंपल थिंग, यू डोंट हैव टू डू दिस, यू कैन हैंडल इट डिफरेंटली। आई डिड इट लाइक दिस, माय मिस्टेक, आई कुड हैव डन इट बेटर, बट डजंट मैटर बिकॉज द कैश फीस इज प्रोबेबली गोइंग टू बी द सेम। कूल। तो फॉर फ्रंट एंड इतना बनाना था, अभी इट वर्क्स। नाउ ऑल आई हैव टू डू इट डिलीट, डिप्लॉय इट अगेन। नाउ इलेक्शन पे नाम डाल देते हैं Joe Biden, चलना पड़ता है। Let's see if it works. Works. Transaction successful. Now I need for front end tuple Joe Biden, and then its value is equal to 0. मतलब count, no one has voted it, and its candidate sorry, its ID is also 0. समझ आ रहा है ना अभी तक up till end? Just हाँ, एक बार आप 43 लाना फिर से समझा। 43 अरे मैं बता रहा हूँ, ये मत समझो, ये मैं तो बोल रहा हूँ मत ही समझो, इसको थोड़ा डिफरेंट वे में हैंडल कर दो। सो यू कैन डायरेक्टली रिटर्न एन अरे, ठीक है? सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम नॉट हैंडलिंग इट इन फॉर्म ऑफ अरे, मैं एक इंडेक्स ले रहा हूँ और फिर एक उसका एक कैंडिडेट का मैपिंग बना रहा हूँ, राइट? तुम अरे ले सकते हो इसकी जगह, तो अरे तो डायरेक्टली रिटर्न हो जाता है इतना। तो इस पे क्या कर रहा हूँ, इधर मैं एक अरे बना रहा हूँ, अरे पे सारे कैंडिडेट्स पुश कर रहा हूँ, राइट, लूप पे, और फिर रिटर्न कर रहा हूँ। ऑल गुड? हाँ, ये जो न्यू कैंडिडेट ये लिखा है ना, ये क्या, ये कैसे लिखा है? ये कौन सा 42 लाइन के एंड में जो इसका 42, ऑब्जेक्ट बनाया है। ये है फिक्स, इसको फिक्स्ड अरे बनाते हैं इसको, जैसे कि ये कैंडिडेट काउंट मतलब एक फिक्स्ड अरे बन गया, समझ रहे हो? अच्छा, तो ये हर बार नया अरे बनेगा? हाँ, मेमोरी, हाँ, कैंडिडेट अरे रिक्वायर, हाँ। नहीं, क्यों नया अरे क्यों बनेगा? हर बार जब भी तुम फॉर फ्रंट एंड करोगे, एक मेमोरी पे बन रहा है ना, तो टेम्पररी बन रहा है। हाँ हाँ, हाँ, तो मतलब कुछ गैस फीस नहीं कटेगा, ओके। इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब टाइम कम था ब्रो। यस, अभी कर देते हैं इन वेट, इज माय स्क्रीन विजिबल? कैन यू सी द थिंग दैट आई एम टेस्टिंग? या चीज टॉप भाई, मार मत खाना यार प्लीज, सॉरी यार, मैं नहीं लेना चाहता नाम। ओके, आई कैन गेट दिस डन। I guess one more. Do you have to take another one? इलेक्शन में मैं कम्युनिस्ट का नाम ले रहा हूँ, बिल्कुल ट्रम्प। चलो डेमोक्रेटिक करते हैं। हाँ, ट्रम्प हो गया। अभी मैं किसी को वोट करूंगा, इन सबका ये आईडी, इसका ये है 2। ओके, थोड़ा गंदी तरीके से दिख रहा है बट इट इज 2, ठीक है? सेकंड इंडेक्स पे ट्रम्प है, तो सेकंड डालते हैं, राइट? वोट करती हैं सेकंड, हो गया, राइट? आई एम डूइंग दिस फ्रॉम दिस फर्स्ट, तो मतलब जो भी डिप्लॉय किया वो भी वोट कर सकता है, बट ओनली फॉर वंस। कूल, लेट्स चेक दिस। ओके, 1 हो गया, कूल। दिस इज द थर्ड वन इज द वोट काउंट, राइट? तो 1 हो गया। अभी मैं इसको ना फिर से चला के देखता हूँ। आई विल क्लिक ऑन दिस अगेन, हो गया फेल, हाहा, गेट लॉस्ट। बट अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे अकाउंट से जाता हूँ और 2 पे फिर से वोट करता हूँ। सी, आई कैन डू दिस नाउ।
For front end, this value is 2. Cool. हो गया? और कुछ बचा है? ये तो वही है कैंडिडेट वगैरह कॉल करने के लिए, और ये कैंडिडेट काउंट है टोटल 3. कूल. करे फ्रंट एंड, डिप्लॉय मारते हैं इसको पहले. ठीक है. Give me a second. I have to use the other browser. Tuk 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 tuk. Remix. ठीक. Okay, अब इसको न्यू वर्क स्पेस. ओके. गुड. Shares entire voting. Okay. Can you see the screen? थोड़ा छोटा छोटा फॉन्ट पे स्टोर ऑन IPFS दिख रहा है ऊपर, ब्रेव, राइट? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रहा. Wait a second. Why is it not showing? Okay. Entire screen 1. Is it visible now? No, it's showing has started screen sharing, but the screen is not visible. It's a black screen. Okay. Second. Okay. Now? Same thing. We have to wait. Kiran, is it not showing? Shall I rejoin? और प्रियंका क्या बता? It's not showing the minutes. Sorry. Give me a second. Let me leave the meeting. Okay, I'm back. Disabled screen share. Hey, Kiran, can you enable screen share for me? Hello. Priyanka? Hello, Garima, am I audible? Yes, you are. Array, screen, okay, I just have to call him. Okay. Sir.
a second. You have to wait. Kiran is. Priyanka, you there? Hey, Priyanshu. Yeah. Hey, can you make me the host again? Okay. So, yeah, done. Good. Now, can you see my screen? It is. Oh, Images. so this is what Brave, right? Hopefully. Now what we have to do is connect to MetaMask and deploy this. Injector Web3. Hopefully connected, custom, SR 0.49. We have to do is deploy. Compiled नहीं है, compile. Deploy. Copy, confirm. Let's wait for deployment. Cool, done. अभी क्या करते deployed, copy this notepad, copy this, and I need the ABI as well. So ABI is here, election, API, all this will be down. Here. Okay, API copy. Okay. Now we will be using the 3JS. So let's create. Now you can see this screen, right? Yeah, give me a second. इसको इधर रखते हैं. Cool. पूरा copy. Paste it here. This and delete this. Can you see my this screen? Yes. Cool. So we will be. What was the step one? Step one was to establish the ABI. The ABI is of the different one. We change करते हैं. I had this copy pasted here. So take the ABI. Okay. Export default ABI. Yes, first default. I copy pasted the ABI. Now I need the contract. Let me copy paste the contract here as well. They could have exported it there on itself. Now what we have to do is we need to create a. How many things do we had? How many things we had? We need to create a vote one, right? A vote button, and add a candidate button, and an election button, vote, and for front end we will directly call it and map it. यही करते हैं. Simple है? Simple. ठीक है? अभी इसके लिए what we have to do is I have already installed Web3, so try to install Web3.js. So npm install Web3. Okay, and let's get started. Wait, पहले import कर देते हैं. Import already हो रखा है. Good. Const take use state 3. I will share you the template. You can use this template and on every single project. So that's good. P is equal to use state. I'll establish a null. Okay, तो कुछ नहीं होगा. And const contract. It's contract. Equal to use state. Same now. और कुछ contract हो गया.
वी नीड आगे सप्लाई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद अपने कुछ ना था, हम एक एक करके साइनर ले सकते हैं एंड वी नीड टू, फिर वो कैंडिडेट्स वगैरह बात पे लेते हैं। Now today I will be teaching you about use effect. So for example, whenever you click a button, right? When you click a button, you expect a state to be changed. So initially, you can think of Web3 as when the component is re-rendered, or initially when it is rendered, एक button automatically click हो जाएगा. It's an invisible button, you can think. And there is a dependency array. Like we will be, I will talk about the dependency array later. But abhi ke liye, let's just think that use effect is a button that is clicked, imaginary button, और कुछ एक function trigger हो जाएगा और उसके लिए कुछ click नहीं करना पड़ेगा, automatically हो जाएगा. Okay, तो यही मारते हैं use effect, and we want that imaginary button to be MetaMask connect. Okay, इसको ऐसा कर दिया, function, and I want to call this function, अंदर ही निकाल देंगे, initialize web3, cool. And now let's check MetaMask is installed or not, which is the if window.ethereum. We have done this already. Cool. Or I'm gonna try catch automatically. Try catch. Aja. Good. Try and check await. Window.ethereum.request. And what we have to do is method पहला वाला account चाहिए मेरे को, ETH. So the ether site is all, it's based on top of Web3.js only. So it's better. It's not better. It's better to use Ether.js because it has a lot of good functionalities. But I will be using Ether.js. Sorry, I will be using Web3.js because there was some error that I was occurring. I'll try to fix it. CCOU request account and accounts. Cool. Okay. Now what we have to do is हमने कर दिया, अभी we need to establish the contract, right? Contract के लिए पहले set करते, set कर देते provider को, right? Const temp3 is equal to new, ये सब copy paste है, window.ethereum. set web3 कर देते हैं, अब अपने पास प्रोवाइडर बन गया, set web3 temp web3. Cool. इतना होने के बाद कैच पे नहीं ना, तो प्रिंट कर देंगे console.log error. सेट कर दिया web3. अब अपने को now what we have to do is establish the contract, right? यही तो बचा है contract. Constant contract is new temp web3 dot eth dot contract. मेरे को क्या डालना है, तीन चीजें यहाँ पे, तीन चीजें डाली थी, but here in web3.js अपने को सिर्फ एक चीजें sorry दो ही चीज डालनी है, which is the ABI and the contract address, because for the signer we will be using differently. We won't be directly using the signer here. When we want to create a transaction, it has a separate function dot send, and we have to, and when we have to create a, you know, means a simple static call, then we have to use the dot call. I will show you how it is done, but therefore we are not passing the signer here. Simple ABI, and ABI के बाद वो हमने डाल रखा ना, ABI yes, and we have to contract address. Cool. So in quotes. Okay. Now temp contract अभी सेट कर देते हैं, set contract temp contract, set contract temp contract. Okay. अभी हमने एक कॉल तो कर दिया, लेकिन यूज इफेक्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, बन रहा है, तो अभी एक डिपेंडेंसी एरे पे हम खाली डाल देते हैं. Here this is known as the dependency array, right? Dependency list. यहाँ पे आप डालोगे
So for example, suppose you want to re-render this component every time something here changes. Okay. For example, you have a counter, and every time the counter's value is updated, you want to execute this use effect. So then you can pass this counter variable here. So this is the use of dependency list, or array, whatever you can say. Set contract कर दिया और क्या? If के बाद कॉल करते हैं इसको, right? Initialize web3. Okay. There is a invisible automatic button that will be generated, so therefore we won't be clicking on a button to trigger this function. It will be automatically created. इंटरव्यूअर का बटन मत बोल देना, ठीक है? npm start इसको क्लियर करते हैं. Start. Okay, give me a second, because it will be started. Can you see this normal screen now? Here a hand thing. Yeah, Okay. yeah, Yeah. So now if I refresh this, yeah, it is actually already because I have already done this once, so it did not pop up because my MetaMask is already connected now. You can see it is connected, showing connected. But if you execute this code, automatic pop-up will come, and you have to just click on this accepted, right? And you have to establish the connection. That's it. So that's why a pop-up did not came and nothing came here. If I show you by writing, हम क्या करेंगे, if window dot यहीं पर ही डाल देते हैं console.log contract, और को ये इस वाले को डाल देते हैं. We will see that it is working. temp3 नहीं, अगर temp3 अगर ये चल रहा है तो ये भी चल रहा है, तो contract function को डाल देते हैं. If it is showing a contract log, it means that it means everything is working. MetaMask is also connected. May refresh. Right? आजा, कहाँ गलत जगह डाल क्या? Log contract console.await नहीं किया. Give me a second. Console.log contract or okay, there's some temp contract. Let's check by writing temp contract. I actually get it why it is not showing. It's not okay, not showing. I hate this thing. Oh, I hate this. Temp contract डाल रहे हैं. Hopefully हम ये भी डाल रहे हैं. Or is it because something else I need to okay. I need to start this again. Hopefully now it will work. रुक जाना. Localhost done करते हैं. Localhost 3000. Okay. चल तो रहा है, दिखा क्यों नहीं रहा? वो भी दिक्कत है. हटाओ. We move on. Not much of a thing. Okay, temp contract. Good. Stop sharing. Ignore what I did at this point of time. We will see if it is working or not by just executing the functions only. Cool. Contract 1C. Just need to check if it is deployed one. Okay. This is the 1C1. Hopefully it will work now. Should. नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं. If window.ethere तभी नहीं चल रहा.
Finally, something is coming. It is because my Ethereum, I was not establishing it properly. So Windows.ethereum, ETHEREUM. I was writing Ethereum. So now let's see. Cool. Okay. I will be copy pasting my code now. It's not working. That's why. Or might be making some error. But cool. Hopefully. Now instead of this contract, I will copy paste this one. Cool. It's for the template that I wanted to provide you. Hopefully, it works. Chalo. Log and contract. Finally, chal gaya. I might be making some syntactical error, but here, as you can see, the contract is coming. Sab chal raha hai. Thank God. Your screen is not visible. Wow. The moment everything works, my screen stopped. Decided to stop working. Nice. Okay. Is my screen visible now? Yeah, browser. ये दिख रहा है? Contract आ गया? हाँ. फालतू है, silly mistake भाई. कोई ना. Okay. Take this. ये सब comment हटा देता हूँ इसको. Take this code, and every time you need to connect to MetaMask, you have to use this typical function. Automatically it will be connected. अब हम क्या करते हैं? इसको delete मारते हैं. ये तो मैंने लिखा था, तो delete मारते हैं. Now what we have to do is create. Now यहाँ पे ये इतना है. To open my this. We need to create a button that will trigger what? That will trigger the. First, we need to set the candidate. Set candidate. So we deployed it from the first contract. It means it means that we will be able to add candidate from this account only. And here क्या करेंगे? On click, the function डाल देंगे यहाँ पे. Cool. Cons. Can you share that वो use effect के अंदर जो function लिखा है उसको? हाँ ये भेज दूंगा, पूरा टेम्पलेट भेज दूंगा. मतलब मतलब वो actually code along करने का था तो इसलिए अभी वो वाला बन रहा है. ठीक है कोड. अरे तुम लोगों ने डिप्लॉय किया है कोड कॉन्ट्रैक्ट इतनी जल्दी कोप अप कर लिया? नाइस. मैंने तो कर. ओके गिव मी. ओके अभी ना इसको कॉपी करो, तब तक मैं ना web.whatsapp करता हूँ मैं. 2 मिनट रुको. You can copy it. Okay, then let me link it. Okay, copy करते हैं. पूरा यूज इफेक्ट से ऊपर सब दे देते हैं. व्हाट्सएप पे दिया क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है तो मीट पे नहीं जाएगा. Cool. Now let's create a simple function. इसको खोलो. हाँ यहाँ पे लिखा हुआ सब. फंक्शन का नाम देंगे फंक्शन, और हम इसको ऐसा कर देते हैं वो इलेक्शन फैट एरो फंक्शन डालते. एंड व्हाट वी विल डू इज कॉल इलेक्शन. यस. Call election, what you can do is here you can pass an event. Okay, event, and you can here on click, instead of on click you can on press down, and what you have to do is check if this value is equal to enter. मतलब जब तुम enter डालोगे तो जो input field पे होगा वो जहाँ पे चला जाएगा, समझ रहे हो?
बटन की जगह इनपुट फील्ड डाल देना, तो वहां पे जो भी तुम डालोगे इट विल ऑटोमेटिकली शो. कूल. नाउ लेट्स गेट द अकाउंट जिस पे हम कॉल करने वाले हैं. const account equal to await web3 dot eth dot get accounts. इसको इज इक्वल टू इवेंट तो नहीं डालूंगा मैं, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ async. कूल. अभी console डॉट लॉग मारते हैं. See if we are able to get our first account. Cool. Error नहीं आई, मारूंगा. हाँ. Good. Set candidate. Error मत आ. Yes, you can get this. So this means that there is only one address here. If I add multiple address, then सब आ जाएंगे. ठीक है? Cool. अभी अपने को क्या करना है? अपने को we need to get or call the set candidate function. क्या था उसका नाम? We need to call the election function. So उसके लिए भी एक डायरेक्ट तो कर देंगे, और क्या हम रिजल्ट वेरिएबल डालते हैं await contract. स्टोर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट है, सेट है. गुड. सेट हो चुका है. नल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसको कैसे पता चलेगा. कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स डॉट इलेक्शन. तो जब भी इन web3.js जब करना है तो कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद डॉट मेथड्स मार देना है. ठीक है, इतना नॉर्मल है. उसके बाद द फंक्शन नेम. ठीक है. This is the same up till here. It's the same as ethers.js. Cool. Now contract dot methods dot election. Election is the name of that function in Solidity. And parameters पे हम लोग क्या पास कर रहे थे? That we used to pass the name of the candidate. So Donald Trump. इसको कुछ चेंज कर देते हैं. मारता हूँ. और फिर after that when you are calling something, मतलब जब आप static call कर रहे हो or you are not creating a transaction, then you have to here write .call. But here as that function is changing a state variable, so we have to write send. ठीक है, बस इतना ही difference है. Send. And from which account? From this account. Accounts of 0. Cool. नाम एक कर्ली ब्रेसेस पर रैप कर रही थी. From account of 0. अभी await कर रहे हैं, इसको लॉग कर देती हैं. console.log results. Cool. Let's try this. I hope that अगर कॉल होगा वहां पे सेंड की जगह तो भी फ्रॉम अकाउंट्स वाला आएगा? नहीं डायरेक्ट कॉल. हाँ, कहीं से भी कर सकते हो. हाँ, होपफुली अब बोलने नहीं होना चाहिए. तभी ना मेरा ethers.js में एक एरर आ रहा था. कूल. अभी चलना चाहिए यार. एरर ना आए. आजा. MetaMask ओपन. MetaMask प्लेस. It might take some time. Did I press on this? I did not press on that. Confirm. Yes, works. How to check if it works or not? Here, this is B00. No, this is a different one. This one, right? 0x1. All we have to do is just call this. अब इससे कनेक्ट होगा, फिर आएगा, नहीं आएगा वरना. Give entry. Is it because? Is it okay? It's not showing. It's not showing here. Okay, cool. Doesn't matter. It will show in there only. It will show in there. अभी इधर नहीं दिखाएगा.
give entry आ रहा है ना, मतलब it's not updated. The candidate count is not updated there, but it is updated here. I'm pretty sure about that. Or it might not have been mine. Simple. Now, let's do let's do another one. Let's add another thing, which is PR code. अब मैं खड़ा हूँगा election पे. Cool. Set candidate. You have to wait for some time. Okay. Now there must be two. Cool. Call done. Now let's now what's left is like let's call that get data to the front end wala. Cool. Const get data to front end. Async. Try catch. पे मार देते data equal to a weight. Let me check in the ABI if it is for front end only. Might have changed. Yeah, for front end. Cool. And here what we'll write is dot call. Console.log. Hopefully चल जाए. Button. अच्छा no. On click. अब अपने को जाएगा ये वाला get data to front end. ठीक. Get data console.log हो जाना चाहिए. डर लग रहा. हाँ. It works. See the Donald VVB that we added and PR code, and both have the index 2 was the vote count, right? अभी मैं इसी अकाउंट से किसी एक को वोट देता हूँ, इसको डोनल्ड VVB को देता हूँ, which is index 0. Cool. हमने कॉल कर दिया, हमने सेंड कर दिया. Again there will be another send. Const vote. Same copy pasting. Try catch. Okay. Now we need to also after voting we need to watch that event as well. Okay, so vote. We need to also get this here account thing. So I would recommend you to create it globally. ठीक है, जिससे भी तुम साइन कराना चाहते हो तो ग्लोबली अकाउंट पे इसको स्टोर कर देना. ठीक है. Const results equal await 3.eth. नहीं अरे ये क्या लिख रहा हूँ, contracts dot method dot vote, which here we have to pass the candidate ID. So I will pass 0 क्योंकि अपने को डोनाल्ड को देना था. Hey, I am not promoting anything. Okay, मैं किसी पे पार्टी पे नहीं. Indian हूँ. From colon accounts of 0 क्योंकि वो एक array में था. यहाँ पे मैंने account of 0 डाला था. Good. Result console.log result. Voted. Result. Cool. Now it's your duty to show it in the front end because console पे आ रहा है तो dab क्या है, dab यही तो है. अभी इसको display करा देंगे, वो dab ही वो कहलाएगा. So it's on you to do the CSS and this beautification. Click a vote. So message.center, which is the first one. Hopefully it will work. Hopefully. Refresh.
करते हैं vote. Don't say that I need to call the set candidate function only first. No. It will work. It will work. Probably did not work because did I click this vote one? On click vote voted dot vote. अगर नहीं होता तो error तो दिखाता कम से कम. Okay, it's not working. Did I get the get data? Yeah, it should work. Should work. But my MetaMask doesn't want to work. Probably. So okay. Set of direct strike. अरे यार अकाउंट ही यही फ्रीज हो गया. MetaMask ही फ्रीज हो गया मेरा. Nice. आ गया. चल गया. Nope. Doesn't seem to be working. Booted from dot contract dot method dot vote. That's did I call it the send one? Dot send. Or is it the वो vote करने के लिए function क्या था? Vote था. We check again. Dot vote. So what? It's vote. Now it doesn't want to work. Good. Log. Okay, let me check if I'm calling this function or not. Is it properly callable? Console.log called button pressed. Nope, it's not working. Why it's not working? The button is not getting pressed. Catch it on. Click on click vote. Good. Button press. Okay. Undefined vote. Okay, तो हम यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं यहाँ पे गलती? Defined vote. Button press. web3.eth.getAccount.vote from account 0. Come on, bro. Come on, guys. Just say it. I missed an S. Did anyone say it in the chat? I missed an S. Literally. That's why it was not working. Chat पे कोई बोल देते हैं यार. वीडियो भी. Cool. Now it will work. Tap. Voted. हो गया. चल गया. Now, as we have it means that we might have triggered an event. Let's check that. So we will view the past events. Past events or in MetaMask you can only handle events up to 1,000 blocks. So in Web3 we will get all the past events of those the event that we set. And what we will do is let's handle the events. Cool. पहले में यहाँ पे था कौन सा? इवेंट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. टेम्पलेट तो है ही. We will get this. Recent. Cool. Now what we will do is we get the block number, latest block. Or you can store the block numbers in some place and we can get the thing wwit web3.eth get block number. अब माइन हुआ था. अपने को beginning से चाहिए, but here we can't. We need to get another provider because MetaMask doesn't handle that. You cannot get all the events that triggered from the beginning of the blockchain. You might need another provider that handles that, but MetaMask unfortunately doesn't. From
and we are using the provider from MetaMask, right? So अभी ऐसा लिखते हैं कि 1000 is limit in MetaMask. If you write from block 0, then it might not show it. So it will show an error that only 1000 is capable. So what we will do is like we will just watch the events from 1000 span. We'll see what I'm trying to do. So like latest block, here is the latest block, minus 999, right? So 1000 block से दिखाएगा const events is equal to await, because last time in ethers what we are doing is we were running another terminal and we were seeing if it is working or not. But when in production grade application, what will you do? You can't do things like that. अपने को सब कुछ शो कराना पड़ेगा जितने भी हुए हैं, right? So you have to do it like this. Contract.get past events. This is a function in Web3, and here you have to write the event name, which is voted. Let me check the event name. Cool. Okay. Event. Candidate count, vote count. Voted event. Cool. Here what we write, voted event, and in here what we write from block. ये वाला, this one, right? मतलब पिछले 1000 से अभी तक current block, because current block तक check करता है from block. Cool. इधर from block और टू रहता है, ठीक है? लेटेस्ट ब्लॉक एक और एक पैरामीटर रहता है लेटेस्ट ब्लॉक, हम लिखेंगे यही फ्रॉम ब्लॉक टू लेटेस्ट ब्लॉक. ये लॉजिक में तो यही आपने ठीक इतना हो गया ना. console.log events. फुल पहले 1000 ब्लॉक में से हमने क्या अभी वॉच इवेंट्स को ब्लॉक करते हैं. ऑन क्लिक वॉच इवेंट्स. चल जाना चाहिए. हाँ, voted event from block something खाली अरे ही आजा. Use explicit type conversion, big int and another. What is wrong, sir? Big int and another type conversion is error. Contract dot. Okay. ETH. ओके, तो चल जाना चाहिए यार ये तो. ठीक है. Might be doing something wrong. The 3.eth.get. Okay, I might be checking the wrong thread. Events from क्या देखते हैं, फिर से मारते हैं. console.log watch. ओके, तो यही एरर आ रहा है. बिग इंट और इसको ना हम लोग टाइप कास्ट कर देंगे बिग इंट टू समथिंग, क्या बोलते, स्ट्रिंग व्रिंग का मार देते हैं. फ्रॉम वोटेड इवेंट. कूल, कोई नहीं, अभी के लिए मैं आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा बाद में, इसको चेक करके. अभी ये मेरे डेटाबेस से बाहर है, because I'm pretty sure I'm using the wrong function here. We will check on the docs and I will here. कोई बता सकता है अभी कुछ लॉजिकल एरर है क्या? व्हाट इवन व्हाट क्योंकि चल रहा था कुछ देर पहले. इसमें ऐसा तो नहीं लेटेस्ट ब्लॉक जो है वो बिग इंट में 999 इंट है? वैसा ही लग रहा है. अरे नहीं, चल तो रहा था कुछ देर पहले, प्रॉब्लम हुई है. बट पहले माइनस कब कर रहे थे? यही तो कर रहे थे. 99 की जगह अगर 99 भी मारता, नहीं माइनस से ही चल रहा था. नहीं, एक्चुअली मैं प्रीवियस वर्जन यूज कर रहा था, अभी नया वर्जन यूज कर रहा हूँ. तो बिग इंट में एंड आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई. नाइस, प्रीटी गुड. सुनो ना, मैं ये कोड भेज दूंगा. पहले बताओ, अब तक तो सब सारे डैप्स इवेंट्स के अलावा सारे तो हो सकता है अभी? समझ में क्या? हाँ, मतलब क्लियर. हाँ, तो बस अब इवेंट्स के चलो हम अडैप्ट तो बना सकते हैं. अब एक बात बताओ, कल तक एक ब्लॉग एप्लीकेशन बन सकता है? ब्लॉग एप्लीकेशन में मतलब जो इनपुट है वो नहीं अभी करते हैं, ठीक है, अभी इटरेट करते हैं.
इस वाले पे मेरे पास ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, वो ब्लॉकचेन क्या था, IPFS। हाँ, मैं नोट पैड दिखाता हूँ, वन नोट। स्क्रीन will फिर से ब्लैक। ठीक है, give me a second। अब सेम। सेम। किरण, आर यू देयर? Yeah, it's yes. What? I think your screen is still blank. It's just showing some black. It's black, right? Yeah. I have to rejoin, but rejoining might not work. But okay. What I want is okay. हम लोगों ने, मैंने जो असाइनमेंट आपको दिया था, right? Have you ever created a blog application up till now? या मतलब पूरी नहीं बनाई थी। मतलब you know the logic, right? मतलब first what you do, you directly do not store it into a database. MongoDB यूज करते हो, MongoDB भी तो नहीं डाल सकते डायरेक्ट, URL डालते हो, right? So वो Firebase पे स्टोर करते होगे। नहीं, वो सब यूज नहीं किया, ऐसे नहीं So- किया मैंने, सिंपल जेसन यूज किया। ओके, तो डायरेक्ट ब्लॉब, जो ब्लॉब आता है वो उसी फॉर्मेट में स्टोर कर दिया बिग टेक्स्ट की हिसाब से। नहीं, मैंने लोकल डेटाबेस बनाया था .json। अच्छा, लोकल डेटाबेस, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, आप इफ यू हैव implemented yesterday's assignment, right? How many of you have done it? समझ आया मैंने क्या बोला था? हाँ, उसमें मेरे को एक दिक्कत थी, उसमें डेटा रिट्रीव नहीं हो पा रहा था, मतलब Share वो करो। CID आ गई थी हाँ, उसकी, और शेयरिंग के लिए वो नहीं होता एक्सेस, CID आ गई थी, फिर उसकी वो जो एक URL होती है IPFS/ वाली, उससे आई हाँ। ट्राई टू एक्सेस इट, तो वो CID एक्सेस नहीं हो रही थी। एंड डेस्कटॉप वाली एप्लीकेशन पे भी सेम हो रहा था, CID आ गई थी बट वो एप्लीकेशन मतलब खुल नहीं रहा था। तो मतलब वो चल रहा था ना जब आपने डाला था? चल रहा था मतलब वो एप्लीकेशन रन हो रहा था ना बैकग्राउंड में, हाँ। या फिर बंद कर दिया था? नहीं चल पता। अगर एप्लीकेशन बंद हो जाएगा तो नहीं दिखेगा। अच्छा, हाँ। तो अब द सीन इज, उससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेक्स्ट के फॉर्मेट पे जावास्क्रिप्ट का एक होता है HTTP, I guess it is deprecated now, but it is because now what we have to do is we have to use TypeScript, but in JavaScript it is deprecated. तो आपको यूज करना है IPFS वाला लाइब्रेरी, एक कर देता हूँ मैं इन chat only, IPFS HTTP, IPFS HTTP, ठीक है। इसका npm पे देखना, समथिंग तीन वर्ड का था, IPFS HTTP समथिंग। तो उस पे आप एक इंस्टेंस बनाना, फिर इनपुट पे टेक्स्ट लेना, और फिर आपका जो प्रोवाइडर का URL होगा, लोकल होस्ट ही होगा, और उस पर डायरेक्ट सेंड कर देना, तो इमेज स्टोर हो जाएगा। तो जो URL आएगा, और URL की जगह दैट डायरेक्ट ID, मतलब UID आएगा, CID आता है ना, दैट CID यू स्टोर इट इन द ब्लॉकचेन। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? मतलब ये काम कैसे करेगा IPFS HTTP स्टार्टिंग में? अगर IPFS HTTP वो मैं, अगर अरे मेरा है नहीं ना इस पे, क्योंकि अभी इन्फ्यूरा क्या करता है वो, सो इंस्टेड ऑफ दिस, इंस्टेड ऑफ IPFS डेस्कटॉप, व्हाट यू हैड टू यूज वाज इन्फ्यूरा, ठीक है। बट इन्फ्यूरा इज नाउ टेकिंग द क्रेडिट कार्ड नंबर इफ यू वांट टू यूज देयर प्रोवाइडेड URL, so what you have to do, और कुछ ऑप्शन है ही नहीं, IPFS डेस्कटॉप यूज करना है। कूल, कल करते हैं उसका IPFS जुगाड़ से करना पड़ेगा, क्योंकि बट व्हाट आई वांटेड यू टू जस्ट एबल टू शोकेस, और इफ यू कैन फाइंड अनदर प्रोवाइडर, can you find another provider like Moralis or Alchemy, if they use IPFS? There is something known as what do we say, there is something known as third web, you can store there, right? But there you have एक to Web3 directly, स्टोरेज था। हाँ, बट मेरे को ना प्रोवाइडर चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, आई डोंट वांट डायरेक्ट, क्या बोलो तो, Can we use Firebase? फायर
Firebase. Firebase तो web 2 मतलब it is used क्या बोलते हो? Firebase is No, not Firebase. It's file. FILE. File base. file base मतलब क्या है? Is it what तो क्या है Yeah, वो? it's something like a provider. We can just store the image in that, and we can connect it with the IPFS, Okay, so that we can get the decentralized storage. IPFS thread. Good. Yeah. Yeah, we can use. Let's see. But I haven't tried it. Have you tried it? Okay. Yeah, actually, yeah, the first assignment that you have given to store the NFT and store it on IPFS. I mean, create the NFT and store it on IPFS. I have used this file base, and I think it's worked, and I can see my. I mean, I can see my minted NFT on OpenSea. Okay. Okay. You can see the NFT. Can you just share the code or the screenshot of the JavaScript? Okay, you are using it on what? No, I JavaScript code have लिखा है ना used आपने? no. I have used the JSON. No, I haven't done any front end thing. I just Okay. I mean implemented only the backend. For the front end, maybe it might अरे be बैकएंड में क्या लिखा था? बैकएंड में जावास्क्रिप्ट में लिखा था ना? और सॉलिडिटी ओनली? Solidity. Okay, okay. मतलब आप हार्ड कोड करके कर रहे हो? No, what? No, these Infura guys, just their issue only. वरना हो जाता. Yes, they are asking for the credit. Yes, I know. Okay, cool. So Kiran, है नहीं? आज का एक्चुअली हो गया सेशन, इतना ही था. अभी तो आगे का असाइनमेंट मैं वही चाहता था कि फाइल बेस से कल ही करते हैं. फाइल बेस से हम अपलोड करते ब्लॉग एप्लीकेशन बनाना. एंड अभी हमने वोट वाला बना दिया, राइट? वी कैन वी हैव डन दिस वोटिंग थिंग एंड ऑल वी हैव टू डू इज स्टेकिंग जो कि मैं आपको बोला था, वो बैंक वाला थिंग, राइट? Once we do that, then I guess you will be able to create any sort of application. Now let me share the screen. Hopefully चल जाए इस पर. दिखाओ, चल रहा? कुछ भी आ रहा? हाँ आ रहा? यस. अरे अरे अरे. तो एक बात बताओ, अभी ओपन जेपलिन पे अभी खोल के देखो ओपन जेपलिन, और मेरे को बताओ उसका एक होगा एक्सेस कंट्रोल. ये चेक करते हैं. ठीक है. ओनेबल है, ये तो नॉर्मल है. एक्सेस कंट्रोल ये भी नहीं है. मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल डज नॉट हैव मिंटर रोल. ऐसा रोल वोल रहता है या अपने को हाउ टू यूसेज रिफंडेबल क्राउड सेल, रिफंडेबल वाइट लिस्टेड, ऐसा. अरे ये तो कोड, ये तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया. एंड दिस इज 0.5.0 एक्सेस कंट्रोल सॉल्व. ओके, देखते हैं. this is okay. You have to use it from here. How to use access control tutorial. एक बार देखना पड़ेगा अपने को. use access control आ गया. good. This is the thing that I use. ठीक है. तो इस एक्सेस कंट्रोल आप इंपोर्ट कर देना, ये वाला एक्सेस कंट्रोल वाला, ठीक है. एंड आप रोल दे देना, सेटअप डिफॉल्ट रोल. डिफॉल्ट एडमिन रोल जब होगा ना, तो डिफॉल्ट एडमिन रोल सारे के सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है. सो डिफॉल्ट और जो डिफॉल्ट एडमिन रोल होता है वो रोल सेट भी कर सकता है, ठीक है. वहां पे डॉक्स पे लिखा रहता है कि कौन क्या कर सकता है. तो फिर क्या करोगे ना, आप एक्सेस बना दोगे. जैसे कि आपने इफ यू हैव क्रिएटेड एनी सॉर्ट ऑफ एडमिन पेज, ठीक है. एडमिन पेज पे ऑथर्स सॉरी एक्सेस किसका रहता है? सिर्फ एडमिन्स का. तो जब भी रिएक्ट राउटर बना के स्लैश इसको जाते हो, आप एक चेक करते हो कि JWT टोकन पे इस पे ये है कि नहीं, एक्सेस है कि नहीं, राइट? तो हियर इज द सेम थिंग. आप ना फंक्शन पे आप चेक कर सकते हो रिटर्न हैज रोल और नॉट, ठीक है. तो हम लॉजिक इस पे फ्रंट एंड पे ऐसा लगा सकते हैं, अगर हैज रोल है तो आप ये वाले URL को रिडायरेक्ट कर सकते हो, समझ रहे हो? और सॉलिडिटी पे आप गेट डालते हो, राइट? जैसे कि आपका HTTP मेथड्स रहता है, गेट पोस्ट पुट रहता है, राइट? ये भी तो हम उसकी तरह ऐसे ही तो यूज कर सकते हैं. इसको हम ऐसे विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि जो गेट हो रहा है वो गेट HTTP गेट की तरह हो रहा है, राइट? जो भी हम स्टैटिक कॉल कर रहे हैं उसको हम HTTP गेट की तरह इमेजिन कर सकते हैं.
तो वहां पे हम लिख देंगे ओनली एडमिन। ठीक है, तो जब भी हमको कुछ एक व्यू करना होगा, एक अलग यूआरएल को जब रिडायरेक्ट करेंगे, तो हम उसको ओनली एडमिन कर सकते हैं और फिर वो ब्लॉक हो जाएगा बाकी सारे यूजर्स के लिए। तो एक्सेस कंट्रोल का डॉक्स एक बार पढ़ लेना, ठीक है, फिर समझ धीरे धीरे समझ आ जाएगा, अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। कूल, कोई डाउट? या फिर मैं ड्राइंग करके बता दूं? Can you brief out what you should be done exactly? नहीं, आई एम जस्ट फॉर व्हाट, फॉर दिस वन, Yes, for दिस वन इज this. ऑन यू, राइट? मतलब मैं बोल रहा हूँ, मेरे को एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है? तो अभी एक्सेस जो एक्सेस कंट्रोल है, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल से तुम क्या कर सकते हो कि हर एक यूजर को एक रोल प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? तो हर एक एड्रेस है, ठीक है, 0xkr, इसको मैंने एड्रेस दे दिया, इसको रोल प्रोवाइड कर दिया एडमिन का, ठीक है? तो फिर क्या होगा कि अगर इस पे हम एडमिन का है और उस पे एक और इसी एक्सेस कंट्रोल पे एक और फंक्शन है डॉट हैज रोल, तो हम ऐसा कर सकते हैं रिक्वायर कोई भी एक फंक्शन पे, सपोज एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ यूजर्स, हम उसी पे ऐसा लिख देंगे रिक्वायर दिस एड्रेस मैसेज डॉट सेंडर हैज रोल ऑफ एडमिन, कोई भी एक गेटर पे डाल देंगे, ठीक है? अब गेटर भी तो कॉल होता है ना कहीं से, ठीक है? ऐसा करके हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. तो हाँ, अब अपने को देखना पड़ेगा हैज रोल एड्रेस, हम गेटर पे शायद से नहीं कर पाएंगे इस चीज को, क्योंकि गेटर नहीं, किसी एक कॉन्ट्रैक्ट से तो जाएगा ना, कहीं से तो एक जाएगा ना, ठीक है? तो शायद हम गेटर से ना कर पाए, वी विल चेक इट, वी विल सी द, लेकिन सेटर पे 110% काम करेगा, ठीक है? अगर अपने को कुछ पोस्ट करना है तो हम चेक करेंगे कि हाँ ये एडमिन है कि नहीं, ठीक है? तो हम कर सकते हैं ऑथेंटिकेट, एक ऑथेंटिकेट बिगिनिंग से हम मेटामास्क क्या करेंगे, हम एक ऑथेंटिकेट वाला एक डाल देंगे जो कि हम बिगिनिंग पे कर रहे हैं ना, तो हियर ये जो हम कर रहे हैं, ठीक है? लॉजिक देखते हैं, हम धीरे धीरे सोचते हैं इसके लॉजिक के बारे में कि करना क्या है, इट्स ऑन यू। ये वाला क्या हो रहा है, ये बेसिकली एक एड्रेस निकाल रहा है, ठीक है? ऑथेंटिकेशन इधर ही तो हो रहा है अपना, हम चेक कर देंगे कि इस पे वो रोल है कि नहीं, समझ रहे हो? अब फिर उस हिसाब से हम रिडायरेक्ट करेंगे उसको एक्सेस कंट्रोल की मदद से। एक बार एक्सेस में कंट्रोल का डॉक्स पढ़ो, समझो, फिर मेरे को पिंग करना, ठीक है? और फिर इसको ना मिलके बनाते हैं, तो उससे हम लोग बना सकते हैं एक एडमिन, मतलब ऐसा एडमिन पेज, फिर होम पेज, शेयरिंग पेज, ऐसा टाइप का एक लॉजिक से बना सकते हैं हम लोग। हम बस आइटरेट कर रहे हैं कि कोई एक वेब 2 ऐप को अगर अपने को वेब 3 पे इम्प्लीमेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, समझ रहे हो? Yeah, gotcha. ओके, तो ये हो गया, दैट्स इट। अभी किरण को कॉल करते हैं, इतना ही है आज का। ओके, हाँ, हेलो किरण। Yeah. I have done the DAP, today's DAP. Okay. It's done. So